Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. Today's video I'll be sharing my review on the new launch from Blue Heaven. So Blue Heaven came out with this foundation and this concealer recently. So this one is their high coverage foundation and this is their Photo Perfect concealer. So I'll be sharing my detailed review about these two products in today's video, and I'm also doing a wear test of these products. So if you're interested, please keep on watching this video. This foundation comes in this kind of outer packaging. Here is the foundation and you get this sponge free with it. So this foundation retails for 350 rupees. That is introductory price, it seems. So here on the packaging it is written that this is worth rupees 500, but since it is launched recently, they are selling it for 350 now. So I'm not sure whether this is the permanent price or they'll increase the price to 500 later. But for now, this foundation retails for 350 rupees, and you get this sponge free with it, which is worth 150 rupees. So you are getting this 150 rupees sponge free with this foundation for 350 rupees. So यहाँ पे ये भी mention किया हुआ है that this foundation comes with primer. It has SPF 50 plus and PA triple plus. Also this one, as I told you, retails for 350 rupees, and the shelf life of this is 30 months. So it is written that use before 30 months from manufacturing date, and the product you are getting is 45 grams. What else? Here it also says that it is waterproof. Let's see whether it claims anything. Okay, so here it says on the outer packaging they have mentioned all the things, like they have given the directions, ingredients, and all the details like where it is manufactured and all. So here it says get a natural, flawless and smooth matte like finish with Blue Heaven high coverage foundation with primer. The lightweight foundation gives an invisible cover, keeping your photo ready, and SPF 50 provides an all-day protection from the sun and UV rays. Now let me show you the inner packaging of this foundation. So this is how this foundation looks from inside. It comes in this tube packaging, but you get a pump here to take out the product, which is really good. So all the information like the price, the expiry details, and the shade, everything, including the directions and claims, everything is mentioned on the inner package sorry, on the inner packaging as well. So that's really nice. So you get this cap here which you need to remove, and then here is the pump from which you can take the product out. This foundation comes in only 4 shades, which is a big bummer. 4 shades, come on, 4 shades कौन launch करता है आजकल foundation में? और Blue Heaven ये ऐसा brand है which is reachable to many people. इसकी reach बहुत ही ज़्यादा है because it's like a homegrown brand, और ये indie brand है तो offline आपको बहुत easily available होता है, तो इसकी availability बहुत अच्छी है, तो बहुत लोग इसको use कर सकते हैं, बहुत लोग को इसका access है बहुत लोगों को. So considering their customer reach, launching 4 shades is very bad, and according to me they should work on their shade range. They have only 4 shades and I got the shade 0 to natural nude, and इनका जो darkest shade है वो भी बहुत light है, तो I don't know कितने लोग इस foundation को use कर पाएंगे because shade range is really bad. So now let's see this foundation in action. तो इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यही स्पॉन्ज यूज़ करूँगी जो इसके साथ फ्री आया है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स ड्राई. तो अभी मैंने इसको वेट नहीं किया है और इसका ये साइज़ है. इट इज़ लिटिल फर्म नाउ, उतना स्पॉन्जी और स्क्विशी नहीं है अभी, बट लेट्स वेट इट एंड सी कि कितना एक्सपेंड होता है. सो आई जस्ट वेट इट एंड कम बैक. सो आफ्टर वेटिंग इट लुक्स लाइक दिस. ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और सॉफ्ट भी हो गया है. बट इफ़ आई कंपेयर इट विद द अदर ब्लू हेवन स्पॉन्जेस, ये उतना सॉफ्ट मुझे अभी फील नहीं हो रहा है. इट इज़ सॉफ्ट और बहुत अच्छे से एक्सपेंड हुआ है, बट इट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द अदर स्पॉन्ज. तो जो ब्लू हेवन के दूसरे स्पॉन्जेस आते हैं, जो फ्लैट एंड वाला स्पॉन्ज आता है, वो मैंने यूज़ किया है. उस पर मैंने एक डिटेल रिव्यू भी शेयर किया हुआ है. आई लिंक दैट वीडियो हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट. तो वो जो स्पॉन्ज है उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे ये मुझे थोड़ा सॉफ्ट कम फील हो रहा है. ये सॉफ्ट है बट उससे थोड़ा कम फील हो रहा है मुझे ये सॉफ्ट. दिस फाउंडेशन कम्स विद अ प्राइमर. सो व्हाट आई विल डू, आई वोंट अप्लाई प्राइमर ऑन वन साइड एंड आई विल अप्लाई प्राइमर ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, एंड देन वी विल कंपेयर कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस फाउंडेशन का विदाउट प्राइमर. सो फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस एल्फ पोरलेस putty primer. Elf is not available in India, but this is a really good product. So I'll apply primer on this side, and on the other side I'll directly apply the foundation.
Now let's apply this foundation. I'll take the foundation on the back of my hand. What man? It is not coming out. Okay, I'm squeezing this a little bit. What? इसमें हवा भरी हुई लग रहा है. The foundation is not coming out. I'm not sure what is wrong with it, but the product is not coming out of it. Let's open and see. Okay, I think I'll have to directly take it. Okay, product तो है इसमें. So that's a bad thing. Okay, it is very thick. The consistency of this foundation is really thick, so maybe that's why it is not coming out. I'm not sure. I'm really disappointed. मतलब मैंने सोचा था कि पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है because you're getting a pump and this tube packaging, but ऐसी पैकेजिंग होने का क्या फ़ायदा अगर प्रोडक्ट बाहर ही नहीं निकल रहा है तो I took this much since I couldn't control it. So let's apply on this side first and then we'll see. No, let's apply on this side first because यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया है, तो I'll just apply. So I'll dot it. Okay, so the shade is dark. This is the second shade in the range. Like there was only one shade which was lighter than this, and this was the second one, and it feels little dark. Okay, let's blend it. तो ब्लेंड तो काफ़ी अच्छे से हो गया, फाउंडेशन बहुत इजीली भी ब्लेंड हो गया था, बट लुक्स लाइक ये जो स्पॉन्ज है वो काफ़ी प्रोडक्ट सोक कर रहा है. एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसने सोक कर लिया है. तो कवरेज आई डोंट सी मच कवरेज. डू यू सी एनी डिफरेंस हियर? आई डोंट सी मच डिफरेंस. एंड ओके, let's apply a little bit more. So I'll apply directly with the sponge. So the coverage looks little better after the second application. You can compare, but the coverage is sheer to medium. It's not at all a high coverage foundation. It won't give you high coverage. The coverage is sheer to medium and it looks natural. Now let's apply on this side as well. So I'll have to take a little bit more. Should we try the pump again? Let's try the pump again. Come on, please. You know, I'm squeezing this and then also I'm trying, but it is not coming out. Waste packaging. बाय द वे स्पॉन्ज सॉफ्ट है काफ़ी और बहुत अच्छा बाउंस भी दे रहा है, तो इससे फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. जस्ट दैट आई फील कि थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है. मतलब जो दूसरा स्पॉन्ज आता है ब्लू हेवन का, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है. वो भी एब्जॉर्ब करता है पर इतना नहीं करता है आई फील. बट ये वाला जो स्पॉन्ज है वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है प्रोडक्ट को, बट अच्छे से ब्लेंड हो रहा है फाउंडेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. एंड सॉफ्ट भी है, तो ऐसे कॉर्नर्स में डिफ़िकल्ट एरियाज जो रहते हैं उसमें भी आराम से यू कैन
यूज दिस टू ब्लेंड दिस, बिकॉज आप ऐसे पिंच कर सकते हैं, यू कैन गो वेरी क्लोज टू दीज एरियाज. तो ब्लेंडिंग में कोई इशू नहीं है, जस्ट दैट प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दिस इज हाउ द फाउंडेशन लुक्स. कवरेज शेयर टू मीडियम है, हाई कवरेज नहीं है, बट इट्स लुकिंग नेचुरल ऑन द फेस. बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रहा है फेस पे, एंड इट इज़ लुकिंग गुड. So on this side I applied primer, and on this side I didn't apply any primer. So if I compare both the sides, I feel कि जो फाउंडेशन की फिनिश है दैट्स बेटर ऑन दिस साइड कंपेयर टू दिस साइड. तो इस पे जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हुआ है, उसकी फिनिश ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रही है compared to this side. But my pores are not at all looking exaggerated on this side where I have not applied primer. The primer I used was pore filling primer. तो इस साइड पे तो ऑब्वियसली पोर्स आर फिल्ड, तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट ऑन दिस साइड एज वेल पोर्स आर विजिबल, मतलब यहाँ से थोड़े ज़्यादा विजिबल हैं, बट ये जो फाउंडेशन है उनको एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट लुकिंग बैड एट ऑल. बट जो फिनिश है फाउंडेशन की, इट्स बेटर ऑन द प्राइमर साइड देन ऑन नॉन प्राइमर साइड. सो यू कैन हैव अ क्लोज लुक. तो द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फाउंडेशन इज़ वेरी थिक, और जो फिनिश मिलती है आपको वो ना तो मैट है ना ड्यूई है, इट्स समवेयर इन बिटवीन. इट गिव्स यू अ नेचुरल फिनिश. सो आई थिंक एनी स्किन टाइप कैन यूज दिस फाउंडेशन. दे से दैट इट कम्स विथ प्राइमर, बट आई वुड सजेस्ट you to use a primer if you want better finish of this foundation and if you have large pores, because it doesn't cover your pores. It won't exaggerate your pores, but it won't fill them as well. So I would suggest you to use a primer underneath this foundation. Let's talk about the concealer now. So Blue Heaven has come out with new concealer. So this is how that concealer looks like. It comes in this cardboard kind of outer packaging. So this is their Photo Perfect concealer, and this is a full coverage concealer, and this one retails for 150 rupees. So this is also introductory offer. Actual price of this concealer is 175, so you can see here 175, and introductory offer is 150. तो I'm not sure कि ये price final है या केवल introductory price है 150 rupees for, but currently it retails for 150 rupees, and you get 16 ml of product in this. That's a lot. Generally you get 6 ml 7 ml of product in concealers, but in this one you are getting 16 ml. I hope I'm reading that correct. And the shelf life of this is 3 years, and all other details are mentioned in the outer packaging. So let's take out the concealer. So this is how the inner packaging of this concealer looks like. It comes in this tube packaging. ये जो packaging है, this looks very similar to the PAC concealer. वो जो PAC का नया concealer उन्होंने launch किया है, I don't remember the name, but that also comes in this kind of packaging only. So all the details are mentioned on the inner packaging as well, but the expiry details are not mentioned here. Here it says for expiry, see the outer carton. Obviously you won't be having that outer packaging with you all the time, so that's bad. They should mention the expiry details on the inner packaging itself. Why? I don't know why they don't do it. By the way, shade name is mentioned here on the inner packaging. I think it's kind of a sticker जो पे यहाँ पे stick किया हुआ है. So this concealer comes in 4 shades. Yes, only 4 shades. I don't know why they launch less shades in these base products. They should launch more shades. So I got these 2 shades with me. So this is 01 Beige, and the second one is 02 Caramel. So 01 Beige is the lightest shade which is available, and this is the second shade, and there are 2 more shades which are darker than. So I was not sure कि कौन सा shade मुझे suit करेगा, तो I got these 2. So let me swatch these 2. By the way, this concealer comes with this applicator, this flat applicator. तो जो पैक का concealer है वो भी इसी तरह के applicator के साथ आता है. तो जब इसको बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई squeezy tube kind of packaging होगी, but you get this this applicator here, which is really good. So these are the 2 shades. So this is 01 Beige, which is the lightest shade, and this is 02 Caramel. This is very light for me. This is also light for me, but I can use this as highlighting concealer. But दोनों ही मेरे स्किन टोन के नहीं हैं, तो इसको केवल मैं हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह यूज़ कर सकती हूँ. आई थॉट कि एक मेरे स्किन टोन का होगा और दूसरा मैं एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर पाऊँगी, बट दोनों ही शेड काफ़ी लाइट है. बट दिस शेड हैज़ मोर येलो अंडरटोन्स टू इट. इसके अंदर उतना ज़्यादा येलो अंडरटोन नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा पिंक अंडरटोन्स हैं, एंड दिस वन हैज़ मोर येलो अंडरटोन्स टू इट. सो दिस वन विल बी बेटर फॉर मी. तो लेट्स अप्लाई दिस.
consistency of this concealer is not thick like the foundation. It's very thin. Okay, let's blend this first and then I'll apply on the rest of my face. I don't see any coverage. It is not blending on this side. आई थिंक ये जो कंसीलर है बहुत ज़्यादा जल्दी सेटल हो जाता है. मतलब आपने देखा मैंने कि बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट अप्लाई किया था. ये वाली साइड मैंने जल्दी से ब्लेंड कर लिया था तो हो गया. बट इस साइड पे ये जो कंसीलर है वो थोड़ा सेट हो गया तो उसके बाद इसको ब्लेंड करना काफ़ी मुश्किल हो गया. ये अजीब सी इसकी पाउडरी टाइप कंसिस्टेंसी हो गई थोड़े ही देर में. तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है टू ब्लेंड दिस कंसीलर. जैसे ही अप्लाई करें वैसे ही ब्लेंड कर लें, अदरवाइज ब्लेंड नहीं होगा. और कवरेज तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो आई एम अप्लाइंग more of it. I generally don't apply concealer like this, but इसके अंदर कोई कवरेज ही नहीं है तो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है. Now quickly let's blend it, otherwise blend नहीं हो पाएगा. आपने देखा. Okay, so after applying 2 layers it is looking better, but still बहुत अच्छी कवरेज नहीं दे रहा है. Like it says full coverage तो कहीं से भी नहीं है. And it settles so quickly. There is something wrong with this concealer. So can you see this part? It's separating, and when I'm trying to blend it, it's moving from its place. And it's already separating and बहुत ज़्यादा dry लग रहा है already. So this time I'll try to blend this using the fingers. देखते हैं कि fingers के साथ इसको blend करना better है या नहीं. और wait, let's try with brush. I'm using this concealer brush. No, it's looking worse when I try to blend it with the brush. You can see here. It's separating and it's not blending, and I feel it's moving the foundation as well. It is looking really dry under my eyes, so this concealer is a big fail. I'll finish rest of my makeup and then I'll share my final thoughts both about the foundation and concealer with you. So guys, I'm back and please don't mind my eyes. I'm testing out something new. So I'm wearing this jelly eyeshadow from Swiss Beauty on my eyes. I'm testing this eyeshadow. And on my lips, I'm wearing this lipstick from Half and Half. This is their no transfer lipstick. And this one is in the shade Warm Kiss. I'll be sharing a detailed review on this eyeshadow and this lipstick on my channel soon. So stay tuned for that. And subscribe to my channel if you haven't done already. And press the notification bell so that you will be notified जब भी मैं वो videos upload करूँ. Now let's come back to the Blue Heaven foundation and concealer. So let's first talk about the foundation. So this foundation is good. It's very easy to blend this foundation. It doesn't take much time to blend this foundation. बहुत easily blend हो जाता है. And it gives a good coverage. Like it will give you sheer to medium coverage and you can build up the coverage, but it won't give you high coverage or full coverage. It will give you sheer to medium coverage, but you can easily build up the coverage and it won't look cakey. Even after you apply 2 layers of foundation, it won't look cakey on your face. Like I applied 2 layers of this foundation on my face and it is looking natural. So it doesn't give you matte finish or dewy finish. So the finish is somewhere in between and it gives you a natural looking finish. So according to me, people with any kind of skin type can use this foundation. Now about the price point, this retails for 350 rupees, which is a good price point, and we are getting a good product in 350 rupees. And this foundation is easily available as well. Blue Heaven is easily available offline, so you can get this foundation from your local beauty stores, or if you want to purchase it from online, you can purchase it from Cuffs and Lashes like I did. I purchased this foundation from Cuffs and Lashes. So you can purchase this online or offline. Now about the longevity of this foundation, I'm planning to do a wear test of this foundation. So I'll be wearing this foundation throughout the day, and I'll do some check-ins after a few hours to show you how it is performing and कितने अच्छे से ये foundation last कर रहा है throughout the day.
So guys, this is my first check-in. It's been 5 hours since I'm wearing this foundation. So majorly what I see is that it's settling into my smile lines. You can see यहाँ पे कि मेरी स्माइल लाइन्स में सेटल हो रहा है. T-zone is looking little bit shiny. मैंने इस फाउंडेशन को सेट नहीं किया था यूजिंग पाउडर. I applied powder only on my under eyes. बाकी किसी भी जगह पे मैंने पाउडर अप्लाई नहीं किया था. So I didn't set this foundation and it is looking like this after 5 hours. So I think काफ़ी अच्छा दिख रहा है foundation. Only around my eyes this is not looking good and I think that's because of the concealer. जो concealer मैंने apply किया था वो separate हो रहा था और वो move हो रहा था अपनी जगह से. तो you can see ये area पे जो product है वो totally move हो गया है और काफ़ी dry लग रही है मेरी under eyes. और ये जो concealer है वो मेरी फाइनल लेंस में सेट हो गया है, यू कैन सी. और थोड़ा बहुत क्रीज भी कर रहा है. बाकी फाउंडेशन के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. इट्स स्टिल देयर और वो किसी भी जगह से मूव नहीं हुआ है. जस्ट दैट ये मेरी स्माइल लाइंस में सेट हो गया है. थोड़ा सा अराउंड माई नोज इट्स सेटिंग. सो गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 8 hours नाउ सिंस आई एम वेयरिंग दिस फाउंडेशन एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. सो दिस पार्ट ऑफ माई फेस इज लुकिंग वेरी ऑयली. But it has not moved from anywhere and staying put. Just that this part of my face is looking very oily. But I think if I touch up with the powder or if I use some blotting sheets and take out this oil, it will still look okay because it has not moved from anywhere. And it is not looking very bad. Like, it is settling into my fine lines, but it is not looking too bad. So yeah, we can say that the longevity of this foundation is really good. It will easily last for 7 to 8 hours. Now let's talk about the cons with this foundation. So there are two major cons with this foundation. First is the shade range. You get only 4 shades, which is a major con because that's a very less number of shade. Like 4 shades में आपको अपना shade कैसे मिलेगा? It's very difficult to find out your shade, the shade which will match you exactly. It's very difficult to find the shade which will match you. Like the shade which I used, it was not matching with my skin tone exactly. अभी पूरा मेकअप लगाने के बाद, पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप करने के बाद ये थोड़ा बेटर लग रहा है. सेटल होने के बाद ये ठीक लग रहा है एंड आई थिंक ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, बट स्टिल इट्स लुकिंग फाइन. बट शेड मैच करना और अपनी स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड फाइंड आउट करना इस शेड रेंज में इज़ रियली डिफिकल्ट बिकॉज केवल 4 ही शेड्स अवेलेबल हैं. तो शेड रेंज इज़ अ मेजर कॉन. एंड द सेकेंड थिंग विच आई डेंट लाइक अबाउट दिस फाउंडेशन एट ऑल वॉज दिस स्टूपिड पंप. मतलब इसमें से फाउंडेशन निकल ही नहीं रहा है. मतलब ऐसी पैकेजिंग होने का क्या फ़ायदा. आई थॉट कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है बिकॉज यू आर गेटिंग अ पंप इन दिस ट्यूब, बट इस पंप में से कुछ फाउंडेशन निकल ही नहीं रहा है. आई गेस बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक है. दैट्स वाई इट्स नॉट कमिंग आउट. और आई डोंट नो, आई गॉट द फॉल्टी पैकेजिंग और समथिंग. तो इस पंप का तो मेरे लिए कोई यूज़ था ही नहीं. आई हैड टू स्क्वीज आउट द फाउंडेशन फ्रॉम द ट्यूब, सो pump was not at all useful for me. So that was the second thing which I didn't like about the foundation. Otherwise everything else is good about this foundation and you can totally check this out if you're looking for a new foundation. Now about the concealer, this Photo Finish Photo Perfect Concealer from Blue Heaven. This is a big fail, big no for me. It was really difficult to blend this concealer. I tried with both sponge and brush. दोनों के ही साथ इस कंसीलर को ब्लेंड करना बहुत ही मुश्किल था. ये एक्चुअली बहुत जल्दी सेटल हो जा रहा था तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था. उसके बाद सेपरेट हो रहा था, मूव हो रहा था अपनी जगह से. और जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था अंडरनीथ दिस कंसीलर, ये कंसीलर उसको भी मूव कर रहा था और बहुत ही पैची दिख रहा था. एंड ऐसा लग रहा था कि जो फेस पे टेक्सचर है उस पर स्टिक हो जा रहा है और उसके बाद वहाँ से हिल ही नहीं रहा है. तो बहुत जल्दी सेटल हो जाता है एंड बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता है. तो दिस कंसीलर इज़ अ बिग 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 नो फॉर मी एंड आई विल नॉट एट ऑल रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस कंसीलर. दिस रिटेल्स फॉर 150 विच इज़ चीप, आई नो, बट 150 रुपीज़ भी आप क्यों वेस्ट करेंगे ऐसे कंसीलर पे. यू कैन गो एंड बाय स्विस ब्यूटी कंसीलर. वो कंसीलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है.
तो why would you spend your, actually why would you waste 150 rupees on this kind of shitty concealer? This is a very bad concealer. So let's talk about the sponge as well, which you get free with the foundation. The sponge is good, ये बहुत अच्छे से expand होता है when you wet it, and it's very soft and squishy. एंड इससे फाउंडेशन को ब्लेंड करना और कंसीलर को ब्लेंड करना, मतलब ये कंसीलर तो ब्लेंड नहीं हो रहा था, बट आई यूज्ड अदर कंसीलर सिंस दिस वन डिडंट वर्क एंड आई ब्लेंडेड दैट कंसीलर विद दिस स्पॉन्ज ओनली. सो इट वाज वेरी इजी टू ब्लेंड बोथ फाउंडेशन एंड कंसीलर विद दिस स्पॉन्ज. एंड ये बहुत ज़्यादा बाउंसी है, तो बहुत ईजीली आपका प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाता है इस स्पॉन्ज से. बट एक ही प्रॉब्लम मुझे जो लगी इस स्पॉन्ज के साथ कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है. जनरली सारे ब्यूटी स्पॉन्जेस प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, बट आई फील कि ये वाला जो स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दैट वाज द ओनली बैड थिंग आई फाउंड विद दिस स्पॉन्ज. अदरवाइज दिस इज गुड. So yeah guys, that's all for today's video. I hope you liked this video and it was helpful for you. If you did, please like and share this video. Also subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.